Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भारत के द्वारा कर दी गई है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऐसे में WHO के मंच से पाकिस्तान ने ऐसा ही भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद का सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए पाकिस्तान के जिहादी आतंकवाद की पोल खोल के रख दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे WHO के सामने। India exercises its right of reply in response to Pakistan's statement in the plenary session. Let me set the record straight. On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point-blank range, in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The UNSC rightly underscored the need to uphold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. Let us not forget these sponsors and organizers operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate, and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan. We took measures to ensure that civilians were neither targeted nor harmed, rather only the Pakistan-trained terrorists and their well-known hideouts. Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus Water Treaty, trying to obfuscate the issue, and they even do so while simultaneously sponsoring cross-border terror, flagrantly violating the very spirit of this treaty or any treaty. They cannot blithely speak of the benefits of peace while actively exporting violence. A state that breeds terrorism cannot masquerade as its victim. Please. Even now, Pakistan's Please country conclude. honors terrorists with state funerals, including individuals under global sanctions. It is a display of shameless duplicity. Pakistan remains the global epicenter of jihadist terror, and no amount of linguistic maneuvering, no veil of rhetoric can obscure its record as a systemic sponsor of terrorism. India has acted and will continue to act as long as necessary to protect our people, uphold our sovereignty, and dismantle the networks of violence aimed at our country. Thank you. पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत जैसे पाकिस्तान को घेर रहा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो सच पूरी दुनिया एक एक करके जान रही है, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। अब ऐसे में WHO के मंच पर भी पाकिस्तान भारत के हाथों घेरा गया और बुरी तरह मार खाता हुआ दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।